वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन है, उसमें हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज़ एन एपीआई एंड एवरीथिंग रिलेटेड APIs. So if you are new on this channel, don't forget to subscribe and like. Let's start. What is an API? An API stands for Application Programming Interface. API का मतलब ये है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और द पर्पस ऑफ API. An API is a contract between two software components. Let me explain you with the help of an image and diagram. ये जो API है ये बताता है कि कैसे दो सॉफ्टवेयर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और डेटा का तबादला कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लेट मी गिव मी एग्जांपल। रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है, उसमें API की एग्जांपल ऐसे देखते हैं। एक गाहक जाता है, रेस्टोरेंट पे बैठ जाता है, उसके पास अभी एक वेटर आता है और उससे पता करता है कि आपको क्या चाहिए, मेन्यू से दिखाता है तो वो कुछ ना कुछ ऑर्डर करता है। फिर वो जो वेटर है वो जाता है किचन वाले के पास कि इस क्लाइंट का ये ऑर्डर है, इसको ये चीज़ भेज दें। तो सेम लाइक एन वेटर, as you see in the restaurant, when you go for a restaurant and you will sit there in one side. After few minutes, the waiter will come and tell you and display some menus of a restaurant, what is in this restaurant. After that, you will select one dish and the waiter will go back to the kitchen and there he will order for you. So the waiter is here, works as an API. This is an example which I am discussing with you. An API is a software intermediary that allows two or more applications to talk to each other. As you see, you come to the restaurant, that time waiter is also there and you will see the waiter, after you order, the waiter come back and complete your order. So this waiter is working here as an API. Here question arises, why APIs matter? क्यों APIs अहम है? जदीद सॉफ्टवेयर की तरक्की में APIs का किरदार अहम है। ये दोबारा इस्तेमाल कारकर्दगी और पैमाने में इजाफे की फ़वाइद फराहम करते हैं। मौसमी हालात, अदायगी की गेटवेज़ वगैरह के लिए API की हकीकत दुनिया में मिसालें पेश करें। सो ये इम्पोर्टेंस है कि जितने भी जदीद सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर APIs यूज़ हो रही हैं। The importance of API in modern software development. The main benefit of using API, we will use reusability, efficiency and scalability with the help of API, and the real world example of API usage, whether APIs, payment gateways and so on. I hope this will make sense for you. If you are new on this channel, don't forget to subscribe and like. So here question arises, how APIs work. यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि APIs वर्क कैसे करती हैं। Let explain this for you. So this is the example how APIs work. As you see in the picture, we have provider Django API, Amazon APIs, Snapdeal API and Flipkart API, and we have one website. So all these APIs are working as a provider, and our website, which is built with the help of any language, like we say Django, Java, JavaScript and so on. So let's say we have a website that's built in Django and we want
everything, and we want to show data of all these websites in our website, and this will be done with the help of APIs of related websites. So using these APIs, I will show you all the data on my website. So all the APIs are working as a provider, and my website, which I want to show you all the data of these APIs working as a consumer. जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दिया जा रहा है, हमारे पास 4 APIs प्रोवाइडर हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो फ्लिपकार्ट API है, अमेज़न API है और ये जो और हैं, इनका डेटा मैं अपनी वेबसाइट में शो करूं और दिखा सकूं, तो उसके लिए मुझे API की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मुझे अमेज़न API या जियोमार्ट या फ्लिपकार्ट API की मुझे ज़रूरत पड़ेगी उन वेबसाइट का डेटा मुझे शो करने के लिए अपनी वेबसाइट पे। तो जितने ये वेबसाइट्स हैं वो एज ए प्रोवाइडर है, और जो मेरी वेबसाइट है वो एज ए कंज्यूमर वर्किंग कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जांपल से आपका जो कंसेप्ट है हाउ API वर्क क्लियर हो चुका होगा। लेट मी गिव मी वन मोर एग्जांपल। As you see in the image, we have a database and web application. Let's say our web application is built with Django, and this web application have interlink with database. And first of all, I am showing this with just the website only. Here, as you see, I want to show this database data on the front end side, only the web. And after few days, my need is extending, and I want to build to show this data on the Android side. As you know, as a developer, the code of web and the Android is different from each other. So at that point, I am going to use the API. With the help of API, I will show on the front end side the website as well as on the Android side, and so on. So this is the use case, and this is the benefit of using API using web application and so on. जैसे कि आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है, हमारे पास एक डेटाबेस है और वेब एप्लीकेशन। ये जो वेब एप्लीकेशन है आप समझ लें Django में बनी हुई है, और इस Django एप्लीकेशन को इंटरलिंक किया गया है डेटाबेस से, जो कि डेटाबेस से डेटा लेके हमें वेब की तरफ शो करती थी। अभी तक ये API का कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ ये इसके साथ वेब पे ही डेटाबेस से डेटा शो करती थी। लेकिन टाइम के बढ़ते बढ़ते हमारी API जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, हमने चाहा कि ये जो डेटा वेब पे आ रहा है वो हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी शो करवाना चाहते हैं। तो उस केस में हमें एक API बनानी पड़ेगी, जिसकी मदद से हम दोनों में फ्रंट साइड वेबसाइट पे भी डेटा डिस्प्ले कर सकेंगे एज वेल एज एंड एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड का जो कोड होगा और जो वेब का कोड होगा वो डिफरेंट है। तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए API बना के आप लोग ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। These are the example of using APIs in the real world application. In API we have some protocols, HTTP protocol, the HTTP methods. In HTTP protocol we have HTTP methods: get, post, put and delete. HTTP request and response are the structures we will use in the APIs later on this channel, but not in the same session. In upcoming session we will see how the get, post, update and delete HTTP methods are working, and what is the purpose and how to use HTTP protocols. And then we will see data formats JSON and XML as a common data formats for APIs. APIs के साथ काम करने में जो हमारे पास डेटा फॉर्मेट होता है वो JSON या XML होता है। And then we will discuss some advantage and disadvantage in the later sessions. So we have types of APIs. Nowadays we have so many types of APIs, but I want to discuss some major APIs types. As I discussed, we have types of APIs. So we have RESTful APIs.
REST means representational state transfer and RESTful APIs. The RESTful APIs in real-world example is Twitter API or GitHub API. Resource-based architecture and current application use the RESTful APIs. So let's move forward. In this era, we have a new concept, and this concept is using from. So we have also GraphQL APIs, and we have the difference between GraphQL and RESTful APIs, and then we will discuss the benefit and use case of GraphQL in our later session. Don't take tension. Then we are going to cover API design and development, how API design with the help of best practices, and importance of clear documentation of APIs, and what are the versioning APIs, security conditional authentication and authorization, what are these in the APIs, and then we will going to cover error handling and response format, API development tools. We will also see, we are going to see this overview of API development frameworks and tools. As you know, in today the popular ChatGPT using OpenAPI, and we have Postman and Swagger, popular option for the API development frameworks. These are the some API development framework, and we will see in our upcoming session. If you any doubt till now, please comment it. अगर अभी यहाँ तक कुछ आपको समझ ना आए हो तो कमेंट करें. मैं यहाँ भी हूँ आपको Django APIs REST फ्रेमवर्क जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कीप इन टच, चैनल्स के साथ जुड़े रहें. यहाँ पर एक मुकम्मल सीरीज REST फ्रेमवर्क की स्टार्ट हो रही है, Django REST फ्रेमवर्क की. थैंक्स फॉर वॉचिंग.